सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है, You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No. राज्यसभा सदस्य जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच शुक्रवार को उस समय तीखी नोकझोंक हो गई जब समाजवादी पार्टी के नेता ने सभापति के उस लहजे पर नाराजगी जताई जब उन्होंने बहस के दौरान जया से बोलने के लिए कहा था। कार्यवाही के दौरान धनखड़ ने जया बच्चन को बोलने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, जया अमिताभ बच्चन इस मुद्दे पर अंतिम वक्ता हैं। इस पर जया ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका लहजा स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, मैं जया अमिताभ बच्चन कहना चाहती हूं कि मैं एक कलाकार हूं और मैं शरीर की भाषा और भाव भंगिमाओं को समझती हूं। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है। जया धनखड़ द्वारा उन्हें उनके पूरे नाम से पुकारे जाने पर दोनों के बीच तनावपूर्ण बहस के कुछ ही दिनों बाद अध्यक्ष द्वारा उनका परिचय जया अमिताभ बच्चन के रूप में कराए जाने के तरीके का जिक्र कर रही थीं। तब उन्होंने केवल अपने पति के नाम से पहचाने जाने पर असहजता व्यक्त की थी। वह धनखड़ द्वारा कथित तौर पर माइक बंद करने का भी जिक्र कर रही थी जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए थे। हालांकि धनखड़ ने गुस्से में जया की बात बीच में ही रोक दी और बार बार राज्यसभा सदस्य को अपनी सीट पर जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जया जी, आपने बहुत नाम कमाया है। आप जानती हैं कि एक अभिनेता निर्देशक के अधीन होता है। जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ वह आपने नहीं देखा है। हर दिन मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। मैं स्कूली शिक्षा नहीं चाहता। मैं अपने रास्ते से हट गया हूं और आप मेरी शैली पर सवाल उठा रहे हैं। जब जया ने विपक्षी सदस्यों के शोरगुल के बीच जवाब देने की कोशिश की तो धनखड़ ने बीच में ही कहा, आप कोई भी हो सकती हैं। आप कोई सेलिब्रिटी हो सकती हैं। आपको शिष्टाचार को समझना होगा। कभी यह धारणा न बनाएं कि केवल आप ही प्रतिष्ठा बनाती हैं। बाद में धनखड़ के साथ अपने शब्दों के आदान प्रदान के बारे में बोलते हुए समाजवादी बच्चन ने कहा, मैंने अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए लहजे पर आपत्ति जताई। हम स्कूली बच्चे नहीं हैं। हम में से कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं। मैं उनके लहजे से परेशान थी और खासकर जब विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने माइक बंद कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति देनी होगी। मेरा मतलब है कि हर बार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना जो मैं आप सभी के सामने नहीं कहना चाहती। आप एक उपद्रवी हैं, बुद्धिहीन। उन्होंने कहा कि आप एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, मुझे परवाह नहीं है। मैं उनसे परवाह करने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि मैं संसद का सदस्य हूं। यह मेरा 5वां कार्यकाल है। मैं जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं। इन दिनों संसद में जिस तरह से बातें की जा रही हैं, वैसा पहले कभी किसी ने नहीं बोला। मैं माफी चाहती हूँ। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान जया ने सभापति द्वारा उनके पति अमिताभ बच्चन का नाम लेकर संबोधित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। यह पहली बार नहीं था जब ऐसी घटना घटी थी। इससे पहले भी जया बच्चन ने इसी तरह से संबोधित किए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। इससे पहले एक सत्र के दौरान वह अपना संयम खो बैठीं और कहा कि अगर उन्हें सिर्फ जया बच्चन कहकर संबोधित किया जाता तो काफी होता। is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat.
I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, no, no seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. Not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here to build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khargeji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as a epicenter of disturbance. Mr. Kharge, as a epicenter of disturbance. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here to build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khargeji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as a
epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. Honorable members, honorable members, honorable members, honorable members, take your seat, take your seat, take your seat, take your seat. Honorable members, एक सेकंड. Honorable members, what a sad day. 9th August 1942. Call of Mahatma Gandhi. Quit India. And this house paid tribute to the martyrs because we got freedom. They are quitting parliament. They are quitting their duty. They are quitting their oath to Constitution. They are showing back not to the chair or to the house, to the Constitution and their sense of duty. And how can we suffer? Leading lights of the ruling party, ultimate controllers of the opposition. Look at the difference. We are in the making of Bharat to be a Viksit Bharat. The world is recognizing us. Accolades are pouring in from all quarters. World Bank, IMF. And the rise is incremental. People are witnessing the rise. Infrastructural growth. We are on way to a development journey which people want to impede. I use this platform with all sense of responsibility. India is a peaceful country. India is a stable country. India has most functional, vibrant democracy. India has leadership continually in its third term. A history in making after 6 decades. India has leadership in Prime Minister that has global recognition. The nation is proud of it. And some people taking note of happenings in the neighboring country are engaging in inflammatory, condemnable narrative. And the ideology to which they subscribe is in silence. It has become a habit, leader of the house, with some of them, that a segment will speak out against the nation. A segment will set at float a narrative which tarnishes our institutions, demeans our democratic culture, weakens our progress, and they will expel the gentleman and take back. It is, I make an appeal to all right-thinking people in the country. It is time for them not to observe silence. Such narratives
have to be ambushed at the threshold. Can you see reason today? Last time they walked out with one slogan, LOP, LOP, LOP. Today what they walked out? One of the most experienced members of this house, 4 decades of experience, Ghanshyam Tiwari ji. His only transgression was he praised Mallikarjun Kharge ji.